So in last class, we were talking about the nitration of phenol. And in today's class, we are moving towards the bromination of phenol. ठीक है ना? अब हम जो fourth chemical property पढ़ने लगे हैं, it is what? It is bromination of phenol. This is bromination of phenol. But you need to keep remember, for suppose if you are taking any phenol and you are reacting it with bromine. So I told you in the last class कि जब आप benzene से bromine का reaction कराते थे तो for that time you need to use bromine along with AlBr3 or FeBr3 because it requires condition to make bromine an electrophile and then benzene will attack on that. But right now in phenols we know that benzene ring is more electronegative, so it can easily attack on bromine without AlBr3 or FeBr3. So you need to keep remember this. In just presence of bromine or aqueous bromine, that phenol can attack on this, and you need to keep remember all possible three conditions, all possible three position 2 and 4, all three possible position पर आपके पास Br attach हो जाएगा. All possible three position पर आपके पास Br attach हो जाएगा. You can see this how reactive phenol is. इतना रिएक्टिव है ब्रोमीन आपके पास, सॉरी फिनोल आपके पास इतना रिएक्टिव है आपके पास कि ब्रोमीन की कितनी पॉसिबल जगहें हो सकती थी उन सब पर आप कह लें कि ब्रोमीन अटैच कर दिया उसने. ठीक है ना? एंड यू नीड टू कीप रिमेंबर दैट ब्रोमीन वाटर जो होता है आपके पास, ब्रोमीन वाटर का कलर होता है रेडिश ब्राउन. दिस इज रेडिश ब्राउन कलर. सो यू कैन से दैट रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर कर देता है. ये आप कह लें कि यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं. ये जो आपके पास कंपाउंड बना है इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं. इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं. You can say that this can be used to test phenol as well. If you want to check कि यार ये phenol है या नहीं, तो आप इसके अंदर ब्रोमीन डालें. अगर वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएं, so you can say that कि इसमें phenol हो सकता है. राइट बच्चों? सर तो ये 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप कहाँ गया? ये बात समझ नहीं आई. 2,4 क्या? 2 फिनोल जो था वो 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप था ना? यस. तो फिर ये तीनों पे जगह क्यों कैसे लग गया? देखें ये पोजीशन भी तो 2 ही होती है ना. अगर आप इसको 1 कंसीडर कर रहे हो तो ये 2 है और ये वाली पोजीशन भी तो 2 ही है ना. बोथ आर 2 पोजीशंस एंड दिस इज 4th पोजीशन. तो ऑल पॉसिबल जो पॉसिबल हो सकती थी पोजीशन, उन सब पोजीशन पर हर पोजीशन जो पॉसिबल हो सकती थी उन सब जगह पर ब्रोमीन उसने अटैच कर दिया. जी यस सर. हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि ये वाइट प्रेसिपिटेट्स क्या है? ये वाइट प्रेसिपिटेट्स, ये जो प्रोडक्ट है ना आपके पास ट्राई ब्रोमोफिनोल, इसके होते हैं वाइट प्रेसिपिटेट्स. तो ये जो ब्रोमीन, अच्छा सही है. ओके ठीक है. ओके ठीक है बेटे, चलें आगे चलते हैं. The same reaction will happen with chlorine as well. So if you talk about chlorination of phenol, so the reaction will be same for this time as well. If you have phenol and you are reacting it with chlorine, so phenol is very, you can say that reactive. The benzene ring inside the phenol is highly electronegative, so it can attach all possibilities of chlorine, all the possible positions, all 3 positions, right? And along with HCl. Right, बच्चों? Is that clear? And ठीक है बच्चों? यस सर. जी सर. तो ब्रोमीन के say साथ that- जो रिएक्शन होगा एग्जैक्टली वो इसके साथ हो रहा होगा वाइट प्रेसिपिटेट्स के साथ. Yes, you can say that. You can say that right now, for suppose the one which is formed, right? This is trichloro phenol, which is forming over here, is used in dilute solutions as antiseptic. You can say that dilute solution
solution of this can be used as antiseptic. क्या हो सकता है ये? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस के तौर पर यूज हो सकता है. यू कैन कॉल दिस एज ट्राइक्लोरोफिनोल. Sometime you will find this on some antiseptic solutions. ये लिखा हुआ होगा TCP. तो आप समझ जाएं कि ये किसकी बात कर रहा है. ये बात कर रहा है ट्राइक्लोरोफिनोल की. ठीक है भाई. यस सर. ओके सर. सर मैं ये पूछ रहा था, आपने शुरू में कहा था कि ये 3 जगह पे लग सकता है खाली, और तीनों पे लग गया. यस 2 और 4 पे लग सकता है खाली. 2 और 4 पे एक्चुअली आपके पास जो बेंजीन रिंग होते हैं हाँ उसमें अगर हाँ. आपने फिनोल OH लगा तो ये 2 पोजीशन 2 हो गई. ये भी 2 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है. तो हर एक पॉसिबिलिटी पे लग सकता है 2 और 4 पे. तो 4 एक ही है लेकिन 2 दो है ना, तो अच्छा. हर पॉसिबल पोजीशन पे लग गया वो. ये 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन क्योंकि पॉसिबिलिटी 2 है 2 की, तो 2 हर जगह लग जाएगा वो. ठीक है. ओके ओके सर. ठीक है. Then we have one more reaction of this. You can say that this is actually coupling reaction. You can call this as coupling reaction, right? What is this? You need to keep remember this, that phenols couple with diazonium salts. ये किसके साथ मिल जाता है भाई? डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ मिल जाता है. किसके साथ मिल जाता है? डाइजोनियम सॉल्ट के साथ मिल जाता है. अब आप बोलेंगे सर ये डाइजोनियम सॉल्ट क्या है? तो फॉर सपोज आपके पास एक बेंजीन रिंग है. ठीक है ना. दिस इज वन ऑफ द बेंजीन रिंग. इसके अंदर नाइट्रोजन के अगर ट्रिपल बॉन्ड बन जाए तो ये क्या बन जाता है आपके पास? ये बन जाता है आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट. क्या बन जाता है आपके पास? डाइजोनियम सॉल्ट. और अगर इसका रिएक्शन किसके साथ हो जाए? फिनोल के साथ हो जाए. इसका रिएक्शन किसके साथ हो जाए बच्चों? अगर इसका रिएक्शन फिनोल के साथ हो जाए तो आप देखते हैं कि आपके पास क्या बन जाता है? आपके पास एक डाई बन जाती है जो कि आप यूज कर सकते हैं टेक्सटाइल में. क्या डाई बनेगी? देखें, ये आपके पास ये बेंजीन रिंग ऐसी है. इसके साथ जो नाइट्रोजन लगे हुए हैं, इसका जो बॉन्ड था वो अब टूट गया और ये अटैच हो गया किसके साथ? ये अटैच हो गया आपके पास फिनोल के बेंजीन रिंग के साथ. ठीक है. दिस इज व्हाट डाइजोनियम सॉल्ट. अच्छा देखें, मैंने एक मिस्टेक कर दी है छोटी सी. शायद आपको मिस्टेक नजर ना आए, लेकिन मुझे आ रही है, तो मैं उसको सही कर देता हूँ. दिस विल बी like this. You know that phenols are what? Phenols are always 2,4 directing group. So if I am attaching nitrogen bond, so it should be on 4th, right? तो ये मैंने 4th पे attach कर दिया. ठीक है. This is what? This is the structure of an azo die. This is one of what? Azo die. This is one of the die, right? For this, you need to keep remember this, that what we are doing. This is phenyl diazonium ion, right? Diazonium, and this is phenyl diazonium ion reacting with phenol, and in the end you will having an azo die, and you need to do this reaction in the presence of NaOH aqueous. You need to do this reaction in the presence of NaOH aqueous along with 5 degrees Celsius temperature, right बच्चों? सर मुझे थोड़ा सा दोबारा जी, जी. रिपीट कर दे. Yes, this is actually the formation of, you can say that, an azo die, right? This is the formation of an azo die. So if you have any diazonium ion इसको बोलते हैं आपके पास ये जो बना हुआ है, ठीक है ना. इसके अंदर अगर आपके पास, अगर आप फिनोल से रिएक्शन कराते हो तो जो नाइट्रोजन है, ये देखें, नाइट्रोजन आपके पास बेंजीन रिंग से क्या बना रही है? बॉन्ड बना रही है. ठीक है ना. ये डाइजोनियम इसमें अटैच हो गया तो ये बन गया एजो डाई. सर मैं ये कहा था कि ये मुझे चीज समझ नहीं आ रही पॉसिबिलिटी वाली, कि आपने कहा था ना कि जैसे ये 4 पर अटैच हो सकता है, तो ये थोड़ा सा हाँ, फॉगी. 2 पे भी हो सकता है, 4 पे भी अटैच हो सकता है. हमने कल तो लास्ट एंड में बात की थी ना, देखो ये वाली, जहाँ हम्म, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां पर अटैच हो सकता है. अच्छा सही है. ओके ओके. तो फिनोल जो है आपके पास 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है. तो ये सिर्फ और सिर्फ आने वाली चीज को या तो सेकंड कार्बन पे या तो 4th कार्बन पे लगाएगा. जहां ये खुद लगा हुआ होगा ना, उसके बाद हम्म. सेकंड या 4th. ठीक है.
अच्छा, और सर ये जो कोपलिंग है इसका क्या मतलब है कि दो फिनोल रिंग अटैच हुए होंगे? कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग इस रिएक्शन का नाम कपलिंग रिएक्शन, अच्छा, ठीक है। ओके सर। Now, if we talk about the test for phenol, we already talk about that the bromine is added to the phenol, so the white precipitates form from reddish brown color. So it will be the test for phenol. That's fine, but we have one more test for phenols. You can say that we have a specific test. Now I have a specific test for phenol. There is one specific test for phenol, and what is this? This is actually when a dilute solution of iron 3 chloride is added to dilute solution of phenol, right? What is test? Test is add dilute iron 3 chloride, right? This is what iron 3 chloride. Add iron 3 chloride in phenol solution. This is what test. And what is the observation of this? A colored complex will be formed, right? A colored complex will be formed. The color depend on the substituent on the ring with phenol itself. A purple coloration is observed. You can say that a purple coloration will be observed, right? So what will be the observation? You can say that the observation will be purple color, yeah, purplish shade, right? So purple color observe, right? ठीक है भाई? And what is the reaction behind this? The reaction behind this is when you have phenol, when you have phenol and you are adding what? This is aqueous phenol, and you are adding iron 3 chloride in this. You will see that आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये जो फिनोल है इसका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और कार्बन का तो बॉन्ड टूट ही नहीं सकता, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट सकता है, तो वो हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपके पास आयरन के साथ बॉन्ड बना लेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और आपके पास साथ साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए थे वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है ना। सो दिस विल बी द रिएक्शन जो कि आपके पास एक टेस्ट के तौर पर अपेयर हो रहा है यहाँ पर। आप इसको टेस्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको आप टेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है। And if you talk about some important uses of phenol, अगर आप phenol की uses की बात करें, so in early days, the phenol was one of the disinfectant used in medicines, right? You can say that this is first disinfectant. This is first disinfectant in medicine. ये medicines में initially आपके पास disinfectant के तौर पर यूज किया जाता था, ठीक है। यस सर। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि जो फिनोल होता है ना वो फिनोल इटसेल्फ आपके पास कोरोसिव होता है, वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज किए जाते थे, ठीक है ना। इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज किए जाते थे तो ये चल जाता था, फिर भी बेहतर हो जाता था, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काम करना शुरू किया केमिकल्स वगैरह पर, तो उनको ये बात पता चली कि अगर हम क्लोरीन डेरिवेटिव्स यूज करें फिनोल के, अगर हम क्लोरीन डेरिवेटिव्स यूज करें फिनोल के, सो दे विल बी मोर बेटर antiseptics than phenols, right? So you can say that after that, later on, it will be discovered that क्लोरो, या आप कह सकते हैं इसको क्लोरीन या क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ phenols are more, you can say that it will be more better antiseptics, ये बेहतर हो सकते हैं आपके पास फिनोल से कंपैरेटिवली, ये अच्छे हो सकते हैं, ठीक है भाई। यस सर।
और जिसमें से एक बेहतरीन एग्जांपल अभी आपने की है टीसीपी व्हिच इज ट्राइक्लोरोफिनोल्स, राइट? ठीक है बच्चों? यस सर। सर वो जो क्रोजन वाली बात है वो ट्राइक्लोरो या जो भी इसके क्लोरो वाले डेरिवेटिव्स हैं उसमें नहीं होती? यस, हो सकती है उसमें भी, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड यूज करें तो आप इसका फायदा ये है कि क्लोरो डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनको आप बहुत कम, और बहुत कम भी अगर आप उनको कॉन्सेंट्रेशन में लेंगे वो तब भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा सही। तो मतलब कंसंट्रेशन एक तरीके से और भी लो कर सकते हैं हम। यस, बिल्कुल। ओके सर। सर ब्रोमीन वाले जो होते हैं वो यूज नहीं होते? ब्रोमीन वाले नहीं, क्लोरीन वाले यूज होते हैं। क्लोरीन ज्यादा बेटर होता है, ठीक है? ब्रोमीन टॉक्सिक होती है आई थिंक वो ज्यादा। यस, यस, ब्रोमीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वो प्रॉब्लम कर सकते हैं वहां पर। देन वी हैव वन मोर यूज ऑफ these phenols. They can be analgesics, right? They can be analgesics, and that is what you can say that कि pain killing and fever reducing properties भी आप, you can say that can extract of willow barks have been known as many countries up 16 या उससे पुरानी सेंचुरी के अंदर 19 सेंचुरी तक आप तकरीबन ये यूज कर रहे थे इसको, इसके इंग्रेडिएंट्स को यूज कर रहे थे एज अ पेन किलिंग और फीवर रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस। और वो ये सारे उसके मेडिकल यूजेस हैं, अगर आप उसको अपने पास लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज एक या दो यूज काफी हैं आपके लिए, ठीक है ना? उसके अलावा अगर आपको याद हो तो ये प्रॉपर्टी हम कल भी कर चुके थे, इफ यू रिमेम्बर, कि अगर आपके पास क्या हो बच्चों, अगर आपके पास फिनोल्स हों, अगर आपके पास क्या हो, फिनोल्स हों, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको कल भी कराई थी। इसके पास फॉर सपोज क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ क्या लगा हुआ है आपके पास, अल्कोहल। अगर मैं इसका रिएक्शन किसी एसाइल क्लोराइड के साथ करा दूं, सो वी नो दैट क्या होगा आपके पास कि क्लोरीन और H रिमूव होकर HCl बना लेंगे, और यहाँ पर आपके पास एक एस्टर टाइप का कुछ लिंकेज बन जाएगा, राइट? ऐसा, ये ऐसी है, we can form this, right? यस सर। Right, so this is what, this is actually aspirin. ये किस चीज का फॉर्मूला है बच्चों? ये आपके पास एस्पिरिन का फॉर्मूला है, ठीक है ना? You can say that aspirin is the most widely used of all analgesics, right? वो जो डिस्प्रिन वगैरह हम लोग खाते हैं उसके अंदर जो फॉर्मूला होता है actually, वो एस्पिरिन का ही तो होता ये है, ठीक है ना? उससे फिनोल से बनती है? ये फिनोल के थ्रू आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो इसमें आप कैसे बना सकते हो इसको, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो इसको? और सर इस अगर रिएक्शन की कंडीशंस नहीं है? इस रिएक्शन की कंडीशंस हो सकती हैं, बट राइट नाउ उसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको बना के दिखाया ना कि हम इससे क्या फायदा अच्छा पा सकते हैं, ठीक सही है ना? सही। You can say that this is one of the, you can say that the thing which is using as stomach irritating effect of this is one of the use, जैसे for suppose this one, ये जो है ना, इसका नाम क्या है? This is salicylic acid. This is what? Salicylic acid. ये salicylic acid है, ये आपके पास स्टमक इरिटेटिंग इफेक्ट्स होते हैं उसको दूर करने के लिए काम आ सकता है। और आपके पास जो एस्प्रिन है वो आप किस लिए यूज कर सकते हो, वो पैरासीटामोल वगैरह में पेन किलर के तौर पर यूज होती है, ठीक है? अच्छा सही। तो सही जो और ऐसे अगर ही आप पूछ रहा हूँ, मतलब पैरा एस्प्रिन और पैरासीटामोल एक ही चीज होती है, अलग अलग है? नहीं, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर ये होता है, देखो पैरासीटामोल जो है उसका स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरह का होता है। ये एक तरफ आपके पास फिनोल लगा हुआ है, एक तरफ आपके पास अमाइड, यहाँ पर जैसे देखो एस्टर लिंकेज बनता है ऐसी अमाइड लिंकेज भी बन सकता है। तो आपने जो बनाया है, दिस इज व्हाट, पैरासीटामोल। ओह अच्छा, और वो एस्प्रिन है। ये जो पैरासीटामोल में रिंग लगा हुआ है, मतलब इससे पैरासीटामोल भी बन सकती है? यस, देखो आपके पास जो एस्टर लिंकेज होता है ना, दिस इज एस्टर लिंकेज, ये एस्टर लिंकेज है, एंड दिस इज व्हाट, एमाइड लिंकेज। तो दोनों ही आपके पास ये एस्टरिफिकेशन और एमाइड जो है आप बना सकते हैं इजीली। तो अगर एस्टर लिंकेज होगा तो एस्प्रिन, और अगर आपके पास एमाइड लिंकेज होगा तो दिस पैरासीटामोल, राइट? एंड दे बोथ अच्छा हैव डिफरेंट यूज इन, यू कैन से दैट ड्रग्स के अंदर इनके अपने अपने यूजेस हैं।
अच्छा सर, वो जो आपने नाम बताया था इन दोनों का, मतलब आपने कैटेगरी बताई थी, वो लिखवा दें जरा। तो एनर्जेटिक्स बोल रहे हैं, एनर्जेटिक्स, अच्छा एनर्जेटिक्स। एनर्जेसिक्स। Yes, it is ANALGESICS, analgesics. एनर्जेसिक्स, ओके, यही पैरासीटामोल, एस्पिरिन, ये सारी चीजें। Yes, ये इनके डिफरेंट ड्रग्स के अंदर यूजेस हैं, मतलब मेडिकल के अंदर इनके क्या यूजेस हैं फिनोल के, इससे आपको आइडिया हो सकता है, ठीक है ना। Now बच्चों, I ओके have सर। one over here, the conversion which is very important over here is one of the, you can say that, reaction scheme. This is one of the reaction scheme which is very important, right? You need to keep remember this scheme. And what is this scheme? For suppose if I have benzene, so how can I form phenol from this? If I want phenol, so how can I form phenol from benzene? So you need to keep remember for this, bacho, from benzene you must need to make what? Nitrobenzene first. You must need to form nitrobenzene first, and then that nitrobenzene should form phenylamine. You need to convert this nitrobenzene into phenylamine, and then you can convert phenylamine into phenols. So these four reactions are quite important. These four, you can say that reactions, or these four structures are very much important. Their reaction scheme is very much important. From benzene to nitrobenzene, how can you move from benzene to nitrobenzene? You know that this, guys. And then from nitrobenzene, how can you move towards phenylamine? It's a simple thing. You talk about this in AS as well, but this time बस दिखाना है और आपको याद आ जाएगा वो सब कुछ, ठीक है ना। इस तरह नहीं पढ़ा था बट पढ़ा था, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट phenols. चेक करते हैं इसको हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं. If you want to make benzene into nitrobenzene, so we know that we need to use concentrated HNO3 along with concentrated sulfuric acid at 50 to 55 degrees Celsius temperature, and it will form what? Nitrobenzene. And you can see this is the loss of oxygen and the gain of hydrogen. So this is actually reduction. So if you want कि आपके पास reduction हो जाए, you can do this in the presence of 10 and hydrochloric acid, right? ये आपको याद होगा, आपने यूज किया था रिडक्शन में वहां पर AS में, ठीक है ना। दूसरा ये कि if you want to convert NH2 into phenols, you must need to remember over here you need to add NaNO2. You need to add NaNO2 along with HCl, and the temperature should be 5 degrees Celsius, right? Or after that, this is the first thing that you need to do. And after that, what you need to do? You need to do the second step, then boil in water. उसके बाद आपने इसको water में boil करना है. These are the two steps by which you can form phenylamine into phenols. Is that clear, every one of you? These three conversions and the reaction scheme is very much important for you. Got it, every one of you? Oh yeah, yes sir, समझ आ गया. Yes, sir. Boil. सर 5 डिग्रीज का मतलब तो काफी कोल्ड हुआ ना? Yes, पहला स्टेप कोल्ड है. सेकंड स्टेप आप देखें कि वो सेकंड बॉयल स्टेप करना है. हाँ, फिर दो अलग अलग स्टेप में रिएक्शन. बॉयल इन वाटर. Is that clear, every one of you? जी सर. Yes, sir. So actually what we studied in the whole chapter is actually arenes are one of the hydrocarbons, and they have one or more than one benzene ring. They can have, right? And then after that we talk about that the benzene rings contain delocalized group of 6 pi electrons, and they confer great stability on the system. Then we talk about, despite their unsaturation, arenes do not undergo the usual addition reactions associated with alkenes. Their preferred reaction type is electrophilic substitution reaction. We know that even they have
carbon-carbon double bonds, but they will not show addition reactions. They are going to prefer electrophilic substitution reaction. Then what is the meaning of aromatic compounds? It can be, you can say that, halogenated in either the ring or on the side chain, depending on the conditions used, right? Aromatic compounds with alkyl side chains can be oxidized by potassium manganate to form benzene carboxylic acid. I told you that if you are providing oxidizing agent to the any side chain of benzene ring, it will form what? Carboxylic acid, the carbon which is directly attached to the benzene ring, right? Then under forcing conditions with hydrogen, the benzene ring can undergo addition rather than substitution. We talk about that if you are adding 200 degrees centigrade nickel catalyst and hydrogen gas, so it will be benzene can be converted into cyclohexane, right? Then phenols are more acidic than alcohols and can be esterified by using acyl chloride. If you want to make them esters, so you need to use acyl chlorides. Carboxylic acid cannot work over there, right? And I told you that the bond, carbon and oxygen bond in phenols is very much strong and no reaction occur in which it breaks. ऐसा कोई reaction होगा ही नहीं जिसमें ये टूट जाए. Then the benzene ring is phenol is much more susceptible to electrophilic attack than is the ring in benzene itself. अगर benzene attack करता है किसी और electrophile पे, it's good, it can easily do that. But when you talk about the benzene ring inside phenols, so it is much more milder. It's a good reaction, it's a fast reaction as compared to benzene ring. Then if you talk about like alcohols and carboxylic acid, phenols react with sodium as well, and like alcohol, it reacts with sodium hydroxide. Unlike carboxylic acid, it does not react with carbonates. You need to keep remember. Or if you talk about some electrophilic reactions, so we already talked about the reactions, acylation, nitration, or alkylation, bromination, chlorination, and all these type of reactions, right? So here we have some reactions. But can you complete these reactions if I gave you some reactions? Okay, so here we have a skill test, last skill test for this chapter. A skill test for you. What we need to do, for suppose if you have a benzene ring, and it is reacting with bromine in the presence of what? AlBr3 and heat, what will be the product? You need to tell it, right? For suppose if you have benzene ring and it is reacting with HNO3 in the presence of sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, and 55 degrees Celsius temperature, so what will be the product, right? And then for suppose if you have benzene ring and you are reacting it with what? 1, 2, 3, 4 chloride, so what will be the product if you are doing this in the presence of AlCl3 and heating, right? For suppose if you have a benzene ring, if you are doing a reaction on this is methyl benzene, right? If you are doing it reaction with chlorine under UV light, so what will be the product, right? For suppose you have this benzene ring, one on there's a CH3 and on the other side it is CH2 and CH3. If you react it with oxygen in the presence of KMNO4, right? You can say that it should be KMNO4, alkaline KMNO4, aqueous alkaline KMNO4, and heating. So what will be the product of this reaction as well, right? And then if we have a benzene ring along with OH, and if you are reacting it with sodium, so what will be the product of this reaction, right? I think these are enough reactions, so let's start, bacho. This is your homework. Just
do this, just start this right now, and if the class is ended, so that will be the homework for you, right?